जी जनाब, एयरफोर्स से रिटायरमेंट की कहानी भी एक दर्दनाक कहानी है। मेरे जो उस्ताद थे, उस्तादों के कमांडर थे, वो तरक्की करते करते एक कमडोर बन गए और बेस कमांडर बन गए पेशावर के। मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। मैं उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट था एंड आई वाज द सीनियर मोस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर इन पेशावर। I had sought an interview with him and I asked him, sir, you did this thing, you did ground me on this thing, but at the same time, right now I have done my MA, LLB, I have got 1000 hours as a flying instructor, instructor rating and commercial pilot license. ये सारे काम मैंने अपने बलबूते पे किए और मैं आपको नहीं बताना चाहता कि एयरफोर्स में आने से पहले क्या ज़िंदगी गुजारी, वो बड़ी दास्तान है। तो अब मेरा क्या कसूर है कि मुझे जीडीपी भी नहीं रखा गया, मैं ग्राउंड पे हो गया, तो ग्राउंड पे आने का करियर नहीं है। मुझे एक तो कष्ट मेरी ये है कि जीडीपी ले लें, दूसरा ये है कि मेरे पे जो आपने रन किया, आपने किया, जो आपने मुझे ग्राउंड कर दिया था, उसको मुझे बताया। उन्होंने कहा, खालिद, मैंने कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ, मेरी लिमिटेशन है। मेरी जजमेंट के मुताबिक मैं आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद यू। Now could not 10 years back I could not see that you are a man of extraordinary capabilities. You could get your MA, LLB and you could get your CSS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और साथ में फ्लाइंग की हुई है। फ्लाइंग के साथ 1000 घंटा हो गया, 1000 घंटे कितने जहाज कर लिए, ये कर लिए। ये तो मैं सोच नहीं सकता था कि मेरा एक स्टूडेंट ये भी कर सकता है। दिस इज रियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई अप्रिशिएट दैट। बड़ी बड़ी कारनामा है आपका। तो आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा जी मुझे बताएं, मेरी ज़िंदगी में क्यों मुझे दोबारा जीडीपी में पायलट अफसर को उतार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी। अब मेरी सजेशन है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा और रिटायरमेंट लेने के बाद जहाँ भी कहीं हो सका मैं हेल्प करके आपको फिक्स करा दूँगा। तो किस्मत ने मार ऐसी थी, उधर मैं रिटायर हुआ, उधर मैंने सब हिसाब लगाया हुआ था कि अपना घर में 20,000 रुपये का बिकता था उस वक्त, बेच दूँगा, 10,000 रुपये माँ के लिए और बच्चों के लिए छोड़ूँगा और अपने 10,000 लेके मैं बाहर चला जाऊँगा। 10,000 में उस वक्त 1,000 से पता नहीं कितने $, $2,000 बनते थे। तो बाहर के मैंने ये काम कर रिटायरमेंट ली। जिस दिन मेरी रिटायरमेंट का सिग्नल आया, रिसालपुर में था मैं, उसी दिन मेरे बड़े भाई का खत आया कि आप बड़ी गलती करेंगे एयरफोर्स छोड़ने के। उधर से मुझे एयरफोर्स से रिलीज का सिग्नल आया, इसी से मेरे बड़े भाई का खत आया कि भाई आप एयरफोर्स में छोड़ के गलती करना। हमें लोगों ने बताया कि ये मकान तुम्हें फिर नसीब नहीं होगा, तुम मकान बेचना चाहते हो तो ये काम मत करना। So that came like a bomb on me. But I had decided, the release had come. I did not discuss with any one of my friends. I packed up carelessly और घर आ गया वहाँ से। साहिबाला के लोगों को समझाया, they would not listen to me. My mother was the head. At the same time, my elder brother and 2 younger brothers were the members. They all agreed with my mother and they refused to sell the house. And I had no penny to depend. मेरे पास सिर्फ एक किस्तों पे लिया हुआ साइकिल था, क्योंकि मैंने वो किस्तें माफ़ करवा के अपने छोटे भाई को दे दिया। वो साइकिल अपने छोटे भाई के लिए दिया ताकि वो साइकिल पे स्कूल जा सके। इसके बाद मैं मुल्तान गया, वहाँ कुछ शेख साहब से मेरे उस्ताद थे, वो उन्होंने कहा बेटा, होल फ्लाइंग क्लब इज योर बॉस, बट एज फार एज मनी इज कंसर्न the club has got no money to give to you. Then I went to Islamabad. इस्लामाबाद में हक साहब थे, अल्लाह मियाँ ने खुश रखे। He is still living माशाल्लाह at Islamabad at 92 years old. उन्होंने भी यही कहा। मैंने कहा अच्छा सर, ये तो हो सकता है ना, ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मालिक हो फ्लाइंग क्लब में, यू आर द चीफ इंस्ट्रक्टर, you come and do any decision anytime you want to start flying, you do it. So I started flying with him
There I met the 4-5 students whom I have just mentioned before. अब ये कि मैंने वहाँ 300-400 घंटे कर लिए थे। मुझे उस वक्त बाद में हक साहब ने मेहरबानी की, मेरे लिए 15 रुपये फी फ्लाइंग आवर मुझे अलाउंस के तौर पर दिया गया, जिसका मैंने 4,500 रुपये बनता था, उन्होंने मुझे कैश पे दे दिया। That was the greatest turning point of my life. I had gone back to इसरार एडम पानी जो मैंने उसको उधार लिया हुआ था, एंड अल्लाह का करना था कि उन्हीं दिनों हसन साहब शाह फ्लाइंग क्लब के चीफ, उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। आई वाज बैक टू पेशावर, आई अप्लाइड फॉर दैट थिंग। मेरे इंस्ट्रक्टर ही उस वक्त बेस कमांडर थे, उन्होंने, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लाइंग क्लब, ही अप्रूव्ड माई appointment as a flying club chief, and they needed me very badly. I had flown more than anybody else could do it. I've flown as much as 10-14 hours a day so that I could accomplish their hours before that thing. उसमें मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट भी रहे, Bharat was one of them which I mentioned, and lot of other things. इसके बाद ये हुआ कि वहीं से मुझे कॉल आ गई लाहौर फ्लाइंग क्लब की। लाहौर फ्लाइंग क्लब में गया, उन्होंने मुझे कहा कि क्या चाहिए, मैंने कहा जी फ्लाइंग मिलनी चाहिए साथ में। उन्होंने मुझे 1,500 रुपये या 2,000 रुपये का रखा, आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये का रखा। तो मैं खुश था कि फ्लाइंग बड़ी मिलती है और रहने के लिए जगह भी वैसी। मैं उस वक्त वहाँ रहना शुरू कर दिया। I started flying like mad. 10 hours a day, 12 hours a day I was flying. उसमें ये हुआ कि बाद में वहाँ नज़दीक में घर भी ले लिया फ्लाइंग क्लब के करीब। 250 रुपये घर एक कोठी का किराया था, तो आई वॉज पेइंग बैक 250 रुपीज़ एंड एंजॉइंग द वॉकिंग डिस्टेंस पे फ्लाइंग क्लब थी। वहाँ पर मैंने 3,000 से ज़्यादा घंटे वहाँ फ्लाइंग किया। वहाँ होने के बाद मैंने ALT भी कर लिया। उसी ज़माने में 71 वार हुई। 71 वार में मुझे टेलीग्राम आई एयर हेडक्वार्टर की तरफ से, मैं PI के लिए सेलेक्ट कर लिया। PI ने सेलेक्ट किया, लेकिन वार हो चुकी सब चीज़ होता, तब मुझे मिली वो। आई कुड नॉट जॉइन PI, आई डिड नॉट इवन जॉइन PI एट दैट टाइम, बट दोज पीपल हू लेफ्ट देयर जॉब एंड जॉइन PI, they left their previous job was gone. मेरे पास कम से कम लाहौर फ्लाइंग क्लब की जॉब तो थी। I continued working लाहौर। वहीं का एपिसोड हुई जो शायद मैंने किसी और जगह से कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स recalled me. I was recalled to do my duty at PF Sabota till 16th of December when Dhaka fall came through. Everybody was disappointed and dispersed. So I quietly came back to Lahore and joined back my job. The base commander job at Lahore. Group Captain Satar, he said, you continue flying with the base commander. We will, when and when we need you, we'll call you up. So I continued my doing till the time came when there was no opening ahead of me. PI had stopped taking me because I was overage according to PI. So I looked around here and there, wrote to various people. There was no hope. I picked up my bag. I had collected by that time something like more than $2,000. I gave 1,000 to my mother and company, which was good enough for them to survive for 1 year. I picked up the other 1,000 rupees. रोड से बस पेशावर आया। पेशावर के बाद मैं वहाँ से बस पे चढ़ा, काबुल एक रात गुजारी, फिर बस पे चढ़ा मशहद कैसे, फिर बस पे चढ़ा तो बस तेहरान पहुँच गया। तेहरान पहुँचने के बाद मैंने अगले ही रोज़ मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू में ग्रुप कैप्टन शाहिद भट्ट था, वॉज माई एक्स बॉस एंड एयरफोर्स चीफ, वेरी सीनियर ऑफिसर, वेरी ब्रेव ऑफिसर, सितारा चॉइस, but he was very kind to me. उसने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया चीफ ऑफ द PART-4 कंपनी के साथ, and I was on the spot hired
You needed a pilot, here is one. I was lucky to be there, and it took 2 months to get my clearance for Air Force of Pakistan. But after my Air Force clearance, I started flying. I flew my first mission with Group Captain Bhatt, and Bhatt Saab was very tough in flying, a very brave person. We did something which we never did before after that. Like we climbed an Islander aeroplane up to 18,000 feet above the gas. Oxygen was not available in that aeroplane at all. But we did स्टाफ के ऊपर जायदान से करमान जाते हुए वहाँ गए. करमान में कोई लैंडिंग रेडार वगैरह नहीं थे. He kept the needle, NDB needle to the wing, to the left wing, and they started circling. And then that circling came down to the ground. We visually looked at and we landed. Oh my God, that was the experience of our life. Very, very daring for him. I asked Bhatt साहब को, मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऑक्सीजन को फेल हो जाने में बंदा बेहोश हो सकता है. What if you had gone coughed off? He said, damn it, I know that you were there, you will take it. I trusted because of you. You are not a smoker, you do not have any bad habits, you will survive. So that's how we came down. तो भट्ट साहब के साथ मैंने बहुत सीखा. उस पहाड़ी इलाके के अंदर जो ईरान के इलाके थे, रेडियो नेविगेट रेडार वगैरह कुछ हेल्प नहीं होती थी. और yourself. But saab, one point in time, we thought we were lost. He said something, you are not never lost unless you admit you are lost. That was one principle I learned. So he kept on fighting hard, and he came down to from Zaidan to Kerman to Shiraz, and we flew on. And I flew that aeroplane, Islander, more than 2,000 hours as a pilot later on. And I had a lot of history in that aeroplane because I used to repair and maintain the aeroplane myself. जहाँ गड़बड़ हो जाती थी उतर के उसको ठीक कर लेते थे and again take off. But it was very tough flying, very rough flying, very demanding flying, very. And one point in time in Shiraz, I was flying a Navo Chieftain, and I got caught in between in between the clouds. The clouds kept rising and I kept climbing. I had oxygen at that time. And this aeroplane had an autopilot. Navo Chieftain was a very highly equipped aeroplane. So I kept climbing 29,000 feet with the oxygen mask on, all by myself, and I cleared the top of the clouds and descended through to Shiraz. And that's how I met that. Number of accidents is avoided by me. At one point in time, I don't remember, don't forget that part. One gendarmerie, the police man came, he said, my wife is dying. She's got a baby, stillbirth. She's got to be taken to some place where the hospital is there. एक जगह थी जहाँ शिराज और बंदरबाज के दरम्यान में. शाम पड़ रही थी, अबाउट इवनिंग टाइम था, सनसेट हो रही थी. तो मैंने कहा हाउ फास्ट क्विकली यू कैन रिव्यू. ही क्विकली वेट एंड वेट फॉर हिज वाइफ. 2 सीटें रिमूव कर उसको जमीन पर लटाया, बांधा और टेक ऑफ करके मैं बंदरबाज जा नहीं सकता था, मेरे पास नाइट रेटिंग नहीं थी. आई वेंट टू बंदर लेंगे was an off airfield which was not lighted, not operated, all on my own. In darkness, I located the airfield because that airfield I knew by my experience. It was parallel to the road. I followed the road from the city and I found the airfield at night. So without any light on the airfield, I landed on that safely and I delivered. The man said, how much money, how much things can I do? I said, just pray for me. A whole lot of it. And this is worldly thing. पर एक इंसान ने दूसरे इंसान की हेल्प की है. That was my mission.
God has been very kind. I've been rewarded all over. So I stayed overnight on my own expenses in Batarlenge. Next day I took off, came to Bandar Abbas for the fueling, etc.